अभी तो इंडिया के भी सर प्राइसेस वगैरह काफी हाई जा रहे हैं क्योंकि अब आई गेस प्रीमियम पेट्रोल के बढ़ चुके हैं प्राइसेस। पेट्रोल के दौर पे बढ़े। देखो वी हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द डैमेज बट टू अ लिमिट। अब यू नो जो चाय आपको 10 रुपए की मिलती थी रेडी पे, आज वो 15 रुपए या 17 रुपए पे पहुंच गई है। ओके। चाय वाला से हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं, हम क्या करें? Also I said 47% of India's LNG was coming from Qatar. हाँ, एंड जो कि डैमेज हो चुका है प्लांट। Right. At the moment that plant is damaged. वो कहते हैं 5 साल लगेंगे हमको उसको ठीक करने में। 1 साल पहले तक ट्रम्प चला रहा था कि रशिया की ऑयल बंद करो, रशिया से तेल लेना बंद करो, गैस लेना बंद करो। हमको भी बोला गया था कि हम टैरिफ लगाएंगे। आज वही ट्रम्प बोलता है कि तुम रशियन ऑयल खरीदो मार्केट से और हमको भी अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके हमको भी बेचो। राइट, तो फिर आपकी यूक्रेन वॉर का क्या हुआ? बिकॉज इफ द पाकिस्तानीज यूज ISIS, that means you're actually using Sunnis to fight the Shias. The moment you play that card, boss, it's game over. It's going to be very ugly. It is no less than World War III. Because the Chinese have a counter effect to that. चाइना पे इफेक्ट पड़ता है, रशिया पे इफेक्ट पड़ता है, सब पे इफेक्ट पड़ता है, यूरोप पे इफेक्ट पड़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा। आर दीज कंट्रीज इज यूरोप इक्विप्ड टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम टेरर अटैक्स? वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? पूरा मिडिल ईस्ट अलग है लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान अलग है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में द मेन रीजन इज ईरान। आई वुड से दिस इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ दिस वॉर। समबडी हैज टू फाइंड एन ऑफ दैट एंड इफ there is one country which can find an off-ramp, that is America. एंड सर अभी जो आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो यूक्रेनियंस यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं इंडिया में, ये क्या हो रहा है? हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉरूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानू सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, बताओ। मैं भी बढ़िया सर। तो आज सर हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है अब ईरान, इजराइल और यूएस के बीच, क्योंकि अभी तक वॉर खत्म नहीं हुआ है। इवन सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। तो सर उसी से स्टार्ट करते हैं कि अब क्या चल रहा है? See, ये वॉर अभी इतनी जल्दी खत्म होगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक देयर इज अ स्ट्रैटेजिक मिसप्लेसमेंट of goals when this war started. Israel and US started this war. First उनकी calculation थी कि regime change with decapitation of Khomeini, वो हुआ नहीं, right? Then over the time they thought that they have been able to subdue Iran because they have been able to damage most of their military infrastructure. But the kind of capacity of rebuilding and the kind of warfare, tactics Iran ने जो दिखाए हैं, it clearly tells you that this is very out of the box. Right, I don't think any other country in the world has this kind of warfare doctrine जो ईरान के पास है। क्योंकि despite taking out their heads, despite taking out the top leadership, the Iranians are fighting in a very different way. ठीक है, they still have the capability, they still have those ballistic missiles, they still have drones. Iranian capacity to build 500 drones per day is still there. Okay. Right, and drone warfare is turning out to be a nightmare for the Gulf countries. Plus, if the thing is कि when you are hitting your enemy, you want to hit them harder and harder. But the problem is when you hit them harder, the problem with Middle East is कि all the energy is concentrated in this area, right? So energy sources become the target. अब रास लफान पे जो कल कतर पे उन्होंने वापस अटैक किया, जब उन्होंने साउथ पार पे किया, इरानियन LPG गैस का जो मेन है इनका, the Iranians retaliated. I don't know why it was done deliberately, ठीक है, to send a message. It was also there are different factors in this war. Okay. एक तो है which is very true that the Iranian nuclear capability, right? But then if you remember the first war of 12 days, the Americans came out saying that they have completely destroyed that capability and Iran cannot build it, right? But then after कितना अभी साल भी नहीं हुआ and they are back onto war. On the Iranians with the same issue, saying they still possess the capability. They have about 400 kg of uranium which can be enriched. Okay. That is what they're saying. There is no proof of that. But yes, Iranians did have capability. They tried to bomb their nuclear civil plant which is managed by the Russians. Right? The Russians got pissed and Trump immediately stopped. Then Trump blamed Israel की गैस साउथ फार्स में Iranian गैस पे जो अटैक हुआ वो इसराइल ने अपनी मर्जी से किया, हमको नहीं पता. But the reality is that the Israelis when they attacked they had given a statement कि US is in complete know-how कि ये जो अटैक है उनको बोल कर किया, ठीक है. So Trump का basically वो statement इसलिए दिया because he wanted the GCC countries to calm down and say I was not aware of it, I would not let it escalate to that level. So जब आप escalation आपका ladder जो है वो आपका कहीं पे stuck हो रहा है, मतलब आप critical infrastructure के पीछे नहीं जा सकते,
And Middle East में खाली oil और gas जो है वो critical infrastructure नहीं है. There is a bigger critical infrastructure, which is desalinization plants. क्योंकि Middle East अगर GCC countries ले लो, ईरान ले लो, इनके पास fresh water नहीं है, right? Okay. They're largely deserts. इनके पास they don't have fresh water. तो ये recycle करते हैं, desalinize करते हैं from the sea for their water, groundwater को resalinize करते हैं. Saudi Arabia is the least dependent on desalinization plants because they recycle the groundwater a lot. But countries like Qatar, countries like Kuwait, countries like Oman, countries like UAE, इनका 80% सोर्स पानी का कहाँ से आता है? Desalinization करके आता है. अगर कल को ये war desalination plants पे पहुँच गई, do you imagine the mitigated disaster it is going to create, because there will be no water left for people to drink? True. Right? And how are you going to, और ये ऐसा तो नहीं है कि in a few hours you'll be able to fix this and you will be able to provide water. So there are real challenges in this war when it comes to US and Israel. Energy infrastructure is one. Oil fields इन्होंने किए, there was retaliation. Gas is very difficult. अब आप ये देखो 47% of gas जो इंडिया की है वो कतर से आती है. हाँ. Right? आफ्टर दिस अटैक कतर ने ऑलरेडी 4 कंट्रीज पे फोर्स मेजर लगा दिया, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ वो जो है उनके गैस सप्लाई के वो नहीं कर पाएंगे. दे हैव सेड इट्स फोर्स मेजर. सो वी विल सी उसमें डैमेज है, $20 बिलियन का डैमेज है उसमें. इंडिया का नहीं है, उसमें चाइना है, उसमें 3 तो अमेरिकन एलाइज हैं जिसमें साउथ कोरिया है, बेल्जियम है, चाइना है, एंड देयर इज वन मोर कंट्री, आई थिंक इट्स जापान, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. ठीक है. सो दीज 4 कंट्रीज पे फोर्स मेजर लग गया. मीन्स इनकी एनर्जी सप्लाई हिट हो गई गैस की. Okay. Right. Apart from that, production is already stopped. So if you have to buy LNG, where do you buy it from? You buy it from US now. That means increased costs, increased shipments. ठीक है. So this is upsetting the entire region, and this is one part of it. Then there is the other part. And what's the other part? The other part is that you have to understand Iran is a Shia-dominated country. GCC is a Sunni-dominated country. Okay. Now this war is spilling into a Shia versus Sunni domain. Okay. Right? Because it is the war of righteousness. Because at the end of the day, the core issue of this war was the issue of Palestine, which is very close to the Arabs, which is very close to the Iranians. Right? Now there is a divide. सो जितना ये एक दूसरे के साथ ईरान जितना रिटेलिएट करेगा जीसीसी कंट्रीज में, उतना जो ये शिया सुन्नी डिवाइड है ये वाइडन होगा. और ये अगर वाइडन होता है मिडिल ईस्ट में, इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट इज गोइंग टू अपसेट एंटायर मिडिल ईस्ट. इट इज गोइंग टू हैव रैमिफिकेशंस एवरीवेयर. Okay. Right? So the problem is they have started a war which they don't know how to end now. Right? The Israeli purpose is very clear. To keep this war going on till Iran, till you completely destroy them. But that purpose is not going to, that objective is not going to work so easily. हाँ. ठीक है. क्योंकि देखो जब आप किसी को push against the wall करते हो ना, but it's a do and die situation for him, so he doesn't care. And Iran is hitting Israel, but then also understand that Iran is also hitting the weakest targets. Which are in the coalition between Israel and US. So GCC countries at the moment are being seen as coalition partners of Iran and Israel, of US and Israel. So if this war goes to a level where it takes overtly religious tones, then what happens? Right? So this war is a very, very dangerous precedent of what is happening on the ground. And the problem today is that there is no institution in the world which has the capability or the capacity to negotiate between warring sides. ठीक है. UN एक institution ऐसा था, but UN की credibility is completely over. आज की डेट में UN is literally a defunct organization. Nobody cares about UN. ठीक है. In my personal opinion, their offices should just be locked. But that's just a personal opinion. But on the serious note, so this war is heading towards something which is very, very dangerous. It can take Shia-Sunni, color. It can become more ferocious. Or, if it goes beyond a certain threshold, the whole Middle East is going to be destroyed. Okay. ठीक है. क्योंकि please understand that Middle East का जो पैसा है, it's oil money. It's all on oil. It's all on expats. Living there, spending a lot of money, earning money, living there. So उनका lifestyle जो है उस पे है.
And the biggest challenge for the GCC countries is कि GCC countries के पास अपना कोई भी defense नहीं है. They don't have a military capability. They have very weak armies. They have never put their investments into training of good armies. They have overly relied on American for their protection. Right? So they've always thought that the Americans are going to come and protect us if something happens in the region. And today they are paying for it. Because this war is expanding America's resources. ठीक है? You have, देखो, अमेरिका जो है वो 600 से 700 पेट्रियट पर साल बना सकता है. उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है. राइट? बट ईरान के पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, about 3000 और बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी उनका आर्सेनल में हैं. You know, it is going to dwindle this ADS thing because it's primarily an aerial war. It's being fought in airspace. It's not a land war. Right? Now, if the Americans say we are going to go inside or we're going to put troops on the ground, Trump is giving a very mixed signal ki no, I will not do it. If I do it, I will not tell you. Right? But they are considering that kind of thing. The problem is if you get boots on the ground, then this war changes. This becomes very dirty. Extremely dirty. आप कहाँ से आओगे? ईरान से आओगे, आपको इराक से आना पड़ेगा. आपको लगता है आप करबला क्रॉस करोगे, सोल्जर्स लेकर, और आपको छोड़ेंगे वहाँ पर लोग. You are going to flare up the entire region, right? What are your other options? Your other options are Pakistan and Afghanistan. So if the land war starts, or Pakistan, what is happening between Pakistan and Afghanistan abhi is due to Iran war. The Pakistanis are overly, जो अभी मीटिंग भी हुई सऊदी में आसिम मुनीर की, that was primarily to design ki how Pakistan is going to use its irregulars into Iran to destabilize Iran further. So basically जो ISIS and this Jaish-e-Adl and all these extremist Sunni groups जो हैं, how Pakistan is going to liberate them. The Iranians know it's going to happen, right? The Afghans are not going to let their land being used. Okay? That is the reason Afghanistan and Pakistan are fighting. There is no other reason Pakistan is bombing Afghanistan. Pakistan is only bombing Afghanistan because they want to subdue them into submission. Afghans are not ready for that game. Afghans are saying we'll play it on our own terms. If that war comes to the Pakistani borders, do you realize how big it is going? It's going to be burning from Pakistan to Syria. And the impact of that war is going to be much larger than what we are facing right now. So this is a very, I would say this is the most dangerous period of this war. Somebody has to find an off-ramp. And if there is one country which can find an off-ramp, that is America. Okay. The Americans seriously cannot be trapped into the Israeli thing of saying that the Israel doesn't want to stop, so we are stuck. The Americans really need to get, Donald Trump needs to get his head on his shoulders back, and he needs to find an off-ramp. Oman is a country which has been least hit, right? Oman can be used for negotiations. Okay. Right? अभी तो ईरान की एंटी आप है. ईरान कहता है कि $700 billion दो और यहाँ से निकलो और damages pay करो और जाओ. But obviously that's not going to happen. But at least they need to find a way to stop this war now. They cannot fight this. One thing is for sure. Despite the losses Americans have taken, and they have taken losses, lost about 16 aircrafts, including 9 Huron drones. They have lost their major 5th Fleet ka naval base in Bahrain. ठीक है? They have lost कतर में they have had damages to their air bases. वो ये 35 कल हुआ है. So वही 16 total number आ गया. 16 planes, right? यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में शोर मच गया था. 5 aircraft fell and nuclear war happened. यहाँ 16 गिर के सिर्फ अमेरिका के. Right? उस पे कोई शोर नहीं करता. उस पे कोई बात नहीं करता है कि 16 जहाज गिर गए तुम्हारे. World's most powerful army, by the way. So, and the fake news of 6 aircraft of Rafale गिर गया तुम्हारा F-35 कल गिर गया. तो Rafale तो उसके सामने बच्चा है. Exactly. Right? It's a 4th generation, 4.5. You're a 5th generation. So the point is that war material losses happen. You cannot judge a war from material losses, but you can judge a war from the resilience the Iranians have showed is something I don't think anybody was expecting. Okay. Right? When I'm talking about the Western countries, they thought that it's going to get over soon. The Iranians will come on table and there will be a negotiation. We'll get what we want. The Iranians have showed absolutely no intent. They have an intent to fight till end.
बिकॉज दे नो कि ठीक है ये दो तो बड़े हैं मगर ये छोटा है, इसको मैं थप्पड़ मारता हूँ तो ये चीखता है तो उनको दर्द होता है। तो ईरानियन जीसीसी को छोटे बच्चे की तरह यूज कर रहा है कि मैं इधर बहुत जोर से थप्पड़ मारूंगा, दर्द उनको होगा, क्योंकि ये चिल्लाएगा तो वो दर्द उधर होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। But somebody needs to find an off-ramp because this is the most dangerous period of the war. अगर इस वक्त अगले एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में ये लोग ऑफ-रैम्प नहीं मिलता, this war has a potential to set alight the entire world. Why? Because the energy crisis are gonna go through the roof. मुझे एक चीज बताओ, you know we talk about countries like Pakistan and Bangladesh. These countries will implode. You don't need Pakistan doesn't need an external enemy. At the moment, खुद ही हो जाएगा. It will implode. Why? Because it doesn't have the economy to sustain this price rise. और जो उन्होंने आज अपने CNG बंद कर दिए, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस वहाँ 335 से ऊपर चला गया, वो पेट्रोल भी बंद कर देंगे। उनकी एनर्जी क्राइसिस कहाँ से? सऊदी से आता है। सऊदी कितना तेल देगा उनको? गैस उनकी आती है कतर से। जब कतर का एनर्जी हिट हो गया, उनके पास कैपेसिटी टू गिव इज लेस। उनकी पाइपलाइन आती है थ्रू अफगानिस्तान, गैस पाइपलाइन आती है थ्रू ईरान आती है। अगर वो हिट होती है कल को, अगर पाकिस्तान यूज करता, अगर ईरानियंस ने कल वो पाइपलाइन उड़ा दी तो पाकिस्तान में गैस कहाँ मिलेगी? ट्रू, राइट? तो इसके बहुत ही बुरा हाल, राइट, बहुत बुरा हाल हो रखा है। सो कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, स्मॉल कंट्रीज, IMF कंट्रीज, राइट, they are going to take a huge hit. How will these countries survive? They are not going to supply. They will implode. ये खत्म हो जाएंगी। यहाँ लोग निकल के regime change ईरान में बाद में होगा। मुझे लगता है पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले घसीट के बाहर निकालेंगे, शाबाश। Right? There is a real danger of this. It's not. I'm not saying this very lightly. There is a real danger of this. So we have to understand that it will alight the whole world in terms of prices, in terms of inflation, in terms of internal unrests, in terms of protests, and of course then it is going to become a larger regional fight, because if the Pakistanis use ISIS, that means you're actually using Sunnis to fight the Shias. The moment you do play that card, boss, it's game over. It's going to be very ugly. It is no less than World War III. Because the Chinese have a counter effect to that. चाइना पे इफेक्ट पड़ता है, रशिया पे इफेक्ट पड़ता है, सब पे इफेक्ट पड़ता है, यूरोप पे इफेक्ट पड़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, यूरोप में बढ़ेगा, अमेरिका में बढ़ेगा, यूके में बढ़ेगा, हर वेस्टर्न कंट्री में टेररिज्म बढ़ेगा। आर दीज कंट्रीज, इज यूरोप इक्विप्ड टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम टेरर अटैक्स विद द काइंड ऑफ इमिग्रेशन दे हैव डन, द मास माइग्रेशन जो उन्होंने वो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो हजूम भर के रखा है कंट्री में, राइट? यूके टेरर अटैक्स हो पाएगा जहां पर आप कुछ भी बोलो तो वो इस्लामोफोबिया लगा के आपको जेल में डाल देते हैं, तो शरिया वो वहाँ ओपनली अब शरिया मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। Exactly. These countries cannot sustain terror attacks. It will be very difficult for them. So this is a very bad scenario. So agle 1 to 2 weeks is going to decide where this war will go. And if it continues the way it is continuing, then we are looking at a lot of trouble. अभी तो इंडिया के भी सर प्राइसेस वगैरह काफी हाई जा रहे हैं, क्योंकि अब आई गेस एलपीजी नहीं लेकिन पेट्रोल वगैरह के प्रीमियम पेट्रोल के बढ़ चुके हैं प्राइसेस। प्रीमियम पेट्रोल के 2 रुपए बढ़े। देखो, वी हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द डैमेज बट टू अ लिमिट। अब प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस कम बढ़े हैं, बट आज 23 रुपए इसके इंडस्ट्रियल फ्यूल के बढ़ गए, डीजल के। सो जब आपकी इंडस्ट्रियल फ्यूल बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जा रही है? उससे बाकी चीजें नहीं महंगी होंगी कि isn't it going to hit your production? It is going to hit cost ना, one way or the other you are going to take a hit. Also I said 47% of India's LNG was coming from Qatar. हाँ, and जो कि डैमेज हो चुका है प्लांट right भी। At the moment that plant is damaged. वो कह रहे हैं 5 साल लगेंगे हमको उसको ठीक करने में। तो you have to manage alternates. क्योंकि उसे 14 years तो मैंने सुना था उसे 14 years लगे थे बिल्ड करने में। हाँ, तो ऑल्टरनेट क्या आपके पास? ऑल्टरनेट आपके पास यूएस है, चाइना है, नाइजीरिया है, इसराइल है, राइट? तो द इम्पैक्ट विल कम टू अस आल्सो। ये नहीं है कि वी आर फुल प्रूफ कि ओ वी आर डूइंग फैंटास्टिक तो हमारा कुछ नहीं बढ़ने वाला। वही मैं कह रहा हूँ कि स्लोली एवरीथिंग इज गोना गो अप। अब आप आज की डेट में देखो ना, ऑन द ग्राउंड गैस सिलेंडर्स बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग प्राइसेस कहाँ 3,000 से 4,000 रुपए, हाँ, राइट? अब जो चाय आपको 10 रुपए की मिलती थी रेडी पे, आज वो 15 रुपए या 17 रुपए पे पहुंच गई है। ओके, चाय वाला जैसे हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं, हम क्या करें? महंगा भी मिल रहा है, बहुत महंगा है साहब। 3,000 का सिलेंडर बिकता है, 4,000 का सिलेंडर मिलता है, तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? सो इम्पैक्ट तो आएगा, ऐसा नहीं है इम्पैक्ट नहीं आएगा।
But ये है कि our economy is in a much larger place to absorb these initial जो hiccups थे. But if this war continues, it is not going to be easy. It is going to impact our supplies. We are also going to face the pinch. And then, you can face a pinch to one extent, then you have to do something about it. Like Trump is saying, कि स्टेट ऑफ हमरूज वो संभाले जिनकी एनर्जी सप्लाई वहां से आती है, मैं नहीं करता कुछ. ही हैज गिवन दोज हिंटर्स, ही हैज गिवन दोज थिंग्स कि इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रॉब्लम. तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं कि नहीं, वी हैव टू सिक्योर स्टेट ऑफ हमरूज बिकॉज वी नीड आवर, एंड if we don't use Strait of Hormuz, we use other areas. Like the Israelis are saying that we need to make this now. Yesterday they were saying that we can actually send energy from Israel right into Saudi Arabia, and from Saudi Arabia the gas pipeline through undersea pipeline can be used. You can bypass Strait of Hormuz, right? So they are looking at solutions of these things, but these are long-term solutions. Israelis are looking at their own gain, right? How feasible it is going to be. Okay. So it is going to hit us. It is hitting everybody. Europe में 30% increase है price का, energy price का. Europe is facing the biggest hit क्योंकि यूरोप ने पहले ही रशिया पे बैन लगाया था, वहां से वो लेते नहीं थे. Now they are back. रशिया से कि they are saying कि we need to buy. So what do you mean by that? अभी एक साल पहले तक ट्रम्प चिल्ला रहा था कि रशिया की ऑयल बंद करो, रशिया से तेल लेना बंद करो, गैस लेना बंद करो. हमको भी बोला गया था कि हम टैरिफ लगाएंगे. आज वही ट्रम्प बोलता है कि तुम रशियन ऑयल खरीदो मार्केट से और हमको भी अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके हमको भी भेजो, राइट? तो फिर आपकी यूक्रेन वॉर का क्या हुआ? What happened to that? That has gone for a toss. So all the equations are out, completely out here. वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? पूरा मिडिल ईस्ट अलग है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान अलग है. अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में the main reason is Iran, right? Because what the Americans and the Israelis want, देखो वही मैंने कहा ना, Americans want and Israelis want Pakistanis to intervene. Saudis want Pakistanis to intervene. Now don't expect Pakistanis कि पाकिस्तानी जाके अपना ADS लगाएंगे सऊदी अरेबिया में. वो काम ही नहीं करेगा. वो चाइनीज ADS है, वो सेम है जो ईरानियों के पास है. वो काम ही नहीं करेगा वहाँ पर, राइट? तो सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप भेज के कैसे बचाएगा? वो क्या बैडमिंटन रैकेट लेकर रॉकेट गिराएंगे वहाँ पर? किससे गिराएंगे? वो नहीं होगा. द प्लान इज टू डू अ ग्राउंड इन्वेजन. द प्लान इज टू डीस्टेबलाइज ईरान, जिसको इजराइल बोलता है ना, मो द ग्राउंड. So they want the Pakistanis to use all their जो जितने जहादी इन्होंने पाले. Why do you think Asim Munir, Americans got Asim Munir very close to him? Okay. Because they need Pakistani jihadi ecosystem at the moment, and that jihadi ecosystem is going to go into Iran. So if you have to do a land invasion, you have to do it from Iran. अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 90% ऑफ जहादी बैठे हुए हैं. My God. Right. So obviously उसका boomerang effect अफगानिस्तान पर भी आएगा. Now Afghans are saying that why are we giving Pakistan again making them the central player in this area and making them powerful, and we also will have to then be a part, और ISI के अंडर हमको भी फिर करना पड़ेगा. We are not ready to play Pakistan's game. हम नहीं करेंगे ना. हम पाकिस्तान को यूज करने देंगे सप्लाईज के लिए, लैंड यूज करने देंगे ना, हम रिक्रूटिंग के लिए यूज करने देंगे ना. हम अगर हमको करना है तो फिर हमको सेंट्रल प्लेयर बनाओ, राइट? सो लड़ाई इस चीज की है, राइट? क्यों मैंने वही कहा ना कि आइदर यू कम इन फ्रॉम इराक, दैट इज अ मिटिगेटेड डिजास्टर. आई एम टेलिंग यू, इराक से ही आएंगे नहीं. अगर इराक से आते हैं, इट विल बी अ ब्लड बाथ इन मिडिल ईस्ट, लिटरल ब्लड बाथ इन मिडिल ईस्ट. देन योर ऑप्शन इज अफगानिस्तान और पाकिस्तान. And the fight is between Pakistan and Afghanistan for the supremacy. Who is going to lead this charge for the Americans? Okay. Right. That is where this game is whole stuck. Pakistan is playing a double game. But silly Pakistan. That is what Pakistan has always survived on. Pakistan is seeing it as an Afghanistan 2.0 moment again. Yes. अफगान जहाज 2.0 मोमेंट कि हम लोग, हमारे को फिर से वो वाला पीरियड आ जाएगा, हम फिर से वही कर लेंगे. दे आर सीइंग इट एज दैट मोमेंट. द अफगान्स डोंट वांट टू टैग अलोंग एंड प्ले अ सेकंड फिडल, राइट? बिकॉज आपको ये भी समझना पड़ेगा, इफ दिस वॉर इंक्रीज देयर इज इफेक्ट ऑन अफगानिस्तान. दे हैव अ हजारा पॉपुलेशन. You have Khyber Pakhtunkhwa, you have TTP, you have all these jihadist organizations, and if this goes on the realm of Shia-Sunni jihad and all that, there is going to be bloodbath in those whole regions. So Afghans are holding off the Pakistanis, saying that if it's their business, they do it. Okay. But we'll do it our way.
We will not let Pakistanis use the land the way they used it in Afghanistan before. Pakistan cannot be that. And that is why this bombing of Kabul is happening. ओके, बट इंडिया इन सब से दूर है. यार आप दूर नहीं हो इन चीज़ों से. You are not away from these things. You just choosing to stay quiet or engage at your own will, but you're not away from these things. Right? You cannot be away from these things. एंड सर अभी जो आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो यूक्रेनियंस यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं इंडिया में, ये क्या हो रहा है? देखो, this is anybody's guess and this has been going on for a very long time. Okay. If after Yunus regime, बांग्लादेश में हमने कहा कि पाकिस्तान and ISI and Americans are colluding. The regime change was done by Americans. Similarly, the Americans are playing a game in Myanmar. Okay. क्योंकि Myanmar is somewhere where the most critical mineral mining happens and it's China का जो Chinese critical mineral है, resources हैं, वो म्यांमार से बहुत आते हैं. So it is anybody's guess. As I said कि जब regime change हुआ, एक तो इनका वो अरसा वाला plan था, because they want to divide Myanmar, right? They don't want the Chinese influence to remain there, but at the same time they don't want the Indian influence also. Okay. And then if you have to keep India in check, your Northeast we know that they have a very long plan of 7 sister states and all that. ठीक है? So this is a murky deal that they train their own mercenaries into drone warfare, into jungle warfare and all that. So Ukrainians are the Pakistanis of the Europeans ना. आज उन्होंने 200 भेजे हैं इजराइल अपनी जंग के लिए. उनके पास लोग नहीं है, वो सड़क से उठा के लोगों को जबरदस्ती ले जाते हैं भरवाने के लिए. बट बाकी दुनिया में उनको कंसल्टेंट बेचने के लिए लोग पड़े हुए हैं. बाकी जगह जो इंसर्जेंसी चल रही है वहाँ यूक्रेनियंस आर फॉर हायर. सो यूक्रेनियंस आर बेसिकली बिकम लाइक पाकिस्तानीज. वी आर ऑन हायर. ठीक है. एंड द CIA plan has always been a very murky plan, whether it is with China, whether it is with India. So I am not surprised that these guys have been caught. I think they have been caught a little too late. They should have been caught earlier. Right? Okay. But obviously you have to catch them. You cannot catch them in Myanmar where they were operating. You have to wait. Russian intelligence obviously Russian intelligence tracks Americans and the Ukrainians, so they have helped us. Yes, it's a joint operation. They have done that. Most probably it is. Okay. And you had to wait for them to come to India. They came to India, we got them. Okay. क्योंकि ये वही म्यांमारी ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को भी ट्रेन करते हैं. राइट? इनका असम में, मणिपुर में बहुत बड़ा हाथ है. नॉर्थ ईस्ट में तो सर कितना कुछ चला. और जो हमने वेपन्स इस बारी मणिपुर में देखे, द काइंड ऑफ वेपन्स, दे आर नॉट ऑर्डिनरी वेपन्स. Right? They were really advanced weapons. So obviously there is a ploy, there is a plan to weaken India. And there always will be. So they were a part of that plan. Okay. और सर लास्ट में अब बस यही कि आई गेस इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस फेस करने वाला है आगे के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं और ये बिल्कुल ही मतलब जो लास्ट वीक जो था उससे सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है. नहीं, ऑब्वियसली वो तो होगा. देखो, द इंडियन करेंसी विल बिकम is taking a hit now. We're getting weaker. Dollar is getting stronger because the exports are coming from America and all that. So the dollar is rising in value. The currencies are going to take a hit. So obviously we're going to take a hit. We should be prepared for that. It is going to pinch us. We might not like it, but it's going to pinch us. So there's nothing you can do about it. ओके, थैंक यू सो मच सर. एंड ऑडियंस, आपके कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी आपको बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में और सर को भी रीच आउट कर सकते हो. एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.